options from the central government and state government that 15% plus 10% is applicable subsidy. So you can deduct it, but you should mention this in the in this table. So how long should our pitch be? Like 30 teams so get us better. I am not sure, but 5 minutes. Let's check with the team so we can again we'll recirculate the exact time duration. What is team cost? Okay, so team cost is depends on individual to individuals. Like suppose if you need any graphic designer, if you need any technical person, if you need a design person, for assembly person or helper. So the price range is means the whatever the range. This finance range is totally different from case to case basis. So suppose if I just take again the same example, if you check with this Rhino fleet requirement. So for fleet requirement, the local representative, it should be 12th pass. It is okay with the 12th pass or with the graduate holding. More the postdoc or any major degree holder is not required. So you can estimate the salary is around 15 to 20,000. So that's how you have to implement with whatever the experience and everything is required from the individual person, team person, and then you can estimate the salary requirement. Any other? I think yes. Any other questions? And if you are not clear with any answer, just ping me again so we can also talk with them. You have to understand with this B plan competition example, it should be with the business plan. Suppose you are selling a product, then you get a revenue from the product. If you are giving the service of the product in a maybe 1 year or 2 year or something, then you will also get the revenue from the service of the product. If you are getting a revenue from their service component replacement, then there's a third option. So that's how the business plan works. In revenue, are we required to form all team like gross margin and all? Are we required to form all term like yes? So in revenue term, you should mention the gross margin. It is better if you can mention. It is not compulsory. If you mention, that would be much better. There is a gross margin, and after the team and everything, it conclude it or reduce it that much. Overall summary, okay, should we mention detail of breakup of every cost in pitch? Overall summary is okay, but whatever the calculation you have done, it should be with the Excel in a background. So in a pitch deck, you just mention these major terms like it is for R&D, it is for team, it is for operational expenses, it is for capital expenses, or it is for patent or whatever it may be. You just mention 7 or 8 or 10 head, whatever the main head that should be mentioned in the pitch deck. But the link should be attached with the Excel sheet in which you have calculated the basic. Suppose you have mentioned the team salary cost of 3 lakhs per month, then you should be clear that these 3 lakhs you have calculated with this team requirement for this 4 number of people or 5 number of people or with the outside agency, whatever it may be. This should be you should be clear with that. Should we mention TAM, SAM, and so on? Yes, the total market size. You should mention that it is better to understand in a better way. If you mention means total addressable market or serviceable market or whatever you have just decided. Suppose your TAM should be very high. So TAM is very high, but what you have targeted. Suppose you have targeted only Gujarat. So your focus will be directly mentioned in the pitch. So you should mention TAM, SAM, and so on. That would be better. But you should not much more focus on that. It should be one of the part of the pitch. Good evening, sir. The next one. Yes, please. Yeah, my name is Abhishek. Just now I texted about TAM, SAM, and SOM. So regarding SAM and SOM, when you're coming up with a product which is kind of into 2 markets, it is addressing 2 markets. So how could be TAM calculated? And in this case, you can mention the both size or individual size also. Okay. For an example, if I talk about the same the EV example, so EV vehicle is the first portion, then second is maybe from the service or the component replacement. So you can mention the both.
both separately, Or you separately, or can, in term? yes, separate, you can, both are okay. You can mention separately or you can mention the total also. TAM, SAM, SOM is for understanding only. It not represent your target mix or target strategy. Nothing will be covered from that portion. Actually, It is for the ac- understanding only. Yes. actually, my startup is regarding integration of instant foods on edible cutlery. Hmm. For example, Okay. if there is a So spoon, take my spoon, stir it in hot water for 15 to hmm. 20 seconds. The top layer dissolves and the Hmm. soup is ready. Sir, Hmm. you can drink the soup with the same spoon. Later, you can consume the spoon as well. Hmm. Okay. So we came up with this So patented अब दोनों technology, and we have mention done कर this. ले. Sir? यस यस, तो आप दोनों मेंशन कर दीजिए। आप अगर आप टारगेटेड मार्केट में आप अगर प्लान करना चाहते हो तो आप दोनों मेंशन कर दीजिए सेपरेटली, या फिर आप कंबाइन मेंशन कर लीजिए, बट कीप इन माइंड कि ये दोनों का इतना है। आप वर्बली वो Okay. पिच में बोल सकते हो और वहां पे प्रेजेंटेशन में कंबाइन डाल देना, बट वहां पे मेंशन कर Okay. देना दिस इज कंबाइंड फॉर दिस टू रेवेन्यू स्ट्रेटजी। यस। Okay. For TAM combined है, उसके बाद में in that we will be taking a percentage for SAM. In that percentage SOM, right, sir? यस यस Okay. यस Okay. यस यस। SOM is the most important thing, whatever you are addressing right now. Got it, sir. Thank you. What you are focusing on is, that's why SOM is much more important compared to TAM and SAM. Got it, sir. Thank you, sir. The next one is, should we add a slide on market competition or should we just explain about our people? Yes, competition is required because nowadays every product or every service has the competition. So competition slide is required. That gives you a better understanding how you are different from the regular one. So the competition slide will be required. The next one is, if we are planning to get a third party factory, maybe for our production, will it fall under team cost? For in that case, you also mention in a product capital cost. Third party you are going to manufacture or not, it doesn't matter in this maybe cost rate. You in a total in PPT requirement, you should mention on the production cost only. Either it is third party or manufactured by you. You can explain it verbally or you can just write it down in a separately. But it is not again depend कि आप कैसे कर रहे हो, वो वहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं। आप वहाँ पे खाली डाल दीजिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी मतलब इतना होगा, और यू कैन राइट इट डाउन लेटर ऑन और बिफोर दैट कि आप थर्ड पार्टी करवाने की सोच रहे हो, तो टीम Sir, कॉस्ट में नहीं आएगा। यस प्लीज। okay. Hello, sir. यस यस I'm प्लीज। Vidhi. So basically, my startup is related to stress reduction and its instant relievation. So, I wanted to ask, like, none of such products are present in market right now. So, how can I estimate the ROI, and can I include, suppose Apple is there is stress reduction feature in it. So can I take their example to explain my product's validations? Okay, so Vidhi, in ROI it is very clear. It is a ratio of two things: the operational and everything, every cost that required, the customer acquisition cost, and everything whatever is required to get the order. So it will come into this capital cost plus operational and plus miscellaneous cost, team cost, everything is included. And whatever you are getting the total net profit, it will be in a division portion. सो दिस टू बी वेरी क्लियर कि अगर आपका कैपिटल लग रहा है, टीम कॉस्ट लग रहा है, ऑपरेशनल लग रहा है, रेंट लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, या कोई थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन का लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, दैट विल बी इन समेशन ओनली। तो वो आपको कवर करना ही पड़ेगा, तभी आप आरओआई टू बी एग्जैक्ट निकाल पाओगे। और सर प्रॉफिट कैसे एस्टिमेट करेंगे? आपके केस में कैन यू मेंशन अगेन प्रॉफिट? आप मतलब आपका रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है? By directly selling the product in the market. ओके, सेलिंग में क्या क्या सेल करे हो? स्मार्ट बैंड, लाइक स्मार्ट वॉच जैसा। स्मार्ट वॉच में तो सिंपल हो गया ना। सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 1000 rupees, your operational and other expenses suppose 500 rupees, or the customer acquisition and whatever the marketing and other expenses are again 200 rupees.
then the total cost is 1,700 rupees. And if you are selling in a 2,000 rupees, so 300 is a selling price. And the selling price, whatever you want to mention, it is on up to you only. So अगर आपको 1700 में बन रहा है तो आपको उसकी सेलिंग प्राइस 2000 रखनी है, 2500 रखनी है, वो आप इसमें ओपन चॉइस कर सकते हो. इट इज एन ओपन क्वेश्चन, ओपन आंसर फॉर यू. बट कंपटीशन स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं 2000 की सेल कर रही हूँ तो कितना डिफरेंस होगा, या उसको 5000 में कर रहे हैं तो कंपटीशन में क्या डिफरेंस होगा. तो अगेन वो कंपटीशन स्लाइड से क्लियर होगा. डू यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir, got it. Thank you. हाँ, तो आपको आप एस्टिमेट इतना भी बड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि वो अगेन वो क्वेश्चन में आएगा कि आपसे तो कम में तो ये लोग दे रहे हैं. तो आपको एक फाइनल प्राइस जो अपर प्राइस सेलिंग की है वो आपको वहां से क्लियर क्लियर हो जाएगी कि आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते और इस एक लेवल से कम नहीं कर सकते. सपोज 1700 से कम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपका कैपिटल कॉस्ट में आ जाता है. और 3000 सपोज मार्केट सेलिंग प्राइस है तो 3000 से ज्यादा नहीं कर पाओगे. देन यू कैन मेंशन कि अगर आपको ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो उसका मार्जिन वगैरह, या डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू जा रहा है तो उसका कुछ मार्जिन आएगा. उसके बेस पे आप एक फाइनल प्राइस कैलकुलेट करोगे और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करोगे, और जो डिफरेंस आता है वो आप प्रॉफिट में कैलकुलेट कर सकते हो. Okay, sir, got it. Thank you. Yes. What about contribution margins? Contribution margins means आप कैसे बोलना चाहते हो? I didn't get the point. If you can clarify it better. उसके अगले वाला ले लेते हैं. If our targeted market till now was not organized on in black or gray economy, then it can't be calculated with any proper source, so we can do our assumption. Yes, you can assume, no worries. It is if it is not clarified or clear till now, you can assume, no worries. Yes, Lakshay, if you सर can मैं add something. लगता है ये क्वेश्चन सर मेरा ही था। सर एक डाउट था दूसरा। Hmm. सर अभी लाइक Yes, yes, ये please. कोई अपना डायरेक्ट कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो, अपना कुछ नया हो ऐसा, लाइक इन इंडिया वो नया हो और अपन को टेस्टिंग फेज में हो कि इंडिया की पब्लिक उस पे क्या रिस्पॉन्ड देती है। जरूरी नहीं है लाइक वो यूएस में फॉर एग्जांपल सीएमए एक्सचेंज पे फॉरकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, उस टाइप का है हमारा स्टार्टअप। अभी Hmm. इंडिया में उस पे कैसा रिस्पॉन्स आएगा एग्जैक्टली वो अपन को पता नहीं है, थोड़ा एजुकेशन देने की जरूरत है। और ये बिजनेस कैसा है, मतलब लाइक इसमें Hmm. आरओई विद पर्सन ग्रो होगा, क्योंकि सैस का कॉस्ट अपना फिक्स रहता है, प्लेटफॉर्म कॉस्ट। कमीशन जैसे जैसे अपने यूजर Hmm. बढ़ेंगे, Hmm. कमीशन Hmm. बढ़ेगा तो अपना ओपीएम बढ़ेगा। तो सर इसमें लाइक कैसे कैलकुलेशन करेंगे Hmm. अपने? तो आपको एजम्पशन लेना ही पड़ेगा. सपोज एजम्पशन में आपका यूएस का मार्केट का अगर कोई रेफरेंस है या किसी रेफरेंस है, तो आपको एक रेवेन्यू और एक प्रॉफिट मार्जिन उनका एक पता चल जाएगा कि अगर उनकी सेलिंग प्राइस ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक अप्रोक्सीमेटली सपोज ये होगी, या फिर अब सास प्लेटफॉर्म की वहां पे डेवलपमेंट कॉस्ट कुछ अलग है, आपके इंडिया के लिए कुछ अलग है, तो कैपिटल चेंज हो जाएगा दोनों केस में. सेकंड, ऑपरेशन पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे. और प्रॉफिट यू 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 कैन एज्यूम देयर इज नो अदर वे कि आप उसको कुछ क्लेरिफाई क्लियरली कर पाओ. एंड द सेकंड, अगर कंपटीशन में आप बात करो तो कंपटीशन में आइदर इट इज फ्रॉम इंडिया और समवेयर एल्स, यू शुड मेंशन. तो ही पता चल पाएगा, क्योंकि नाउ डेज कोई शायद ऐसा बिजनेस नहीं होगा या सर्विस नहीं होगी जिसका कंपटीशन हो. सबकी कंपटीशन तो रहेगी. तो आपको कंपटीशन स्लाइड में अगर वो पूरा मैच नहीं हो रहा, थोड़ा मैच हो रहा है, तो भी उसको डालो, क्योंकि वही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. आप ऐसे बोलोगे पूरा नया है, देन सब में डाउट जाएगा कि पूरा नया तो हो ही नहीं सकता. तो जितना भी अगर 50% मैच हो रहा तो भी उसको डालो, बट कॉम्पिटिशन स्लाइड में उसको रखो. तो सर इसमें एप्लीकेबल बिजनेस रिस्क पिच डेक में अपन को दिखाना रहता है कुछ, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी हम्म. रिस्क रहता है, ऐसा सब रहता है कहीं कहीं, लाइक गैम्बलिंग साइट्स जो, अगर आपका हम्म. कोई गैम्बलिंग साइट है उसमें फिर पॉलिसी रिस्क रहता है गवर्नमेंट का, तो वो सब भी दिखाना है। हम्म. एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप मेंशन कर सकते हो कि इट इज मोर लार्जली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी. सपोज एक चेंज होता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है. यू कैन मेंशन, बट आप लार्जली उसको शोकेस मत करना, क्योंकि वो इश्यू मतलब नेगेटिव इंप्रेशन भी क्रिएट करेगा. तो इट्स बेटर पॉजिटिव दिखाते हैं, नेगेटिव नहीं दिखाते ज्यादा. बट यू शुड मेंशन इन वन लाइनर और टू लाइनर. तो क्या होगा, आपने कुछ छुपाया भी नहीं है और आपकी चीज भी कम्युनिकेट हो जाएगी properly. तो सर ये 5 मिनट का से छोटा पिच रहेगा अपना, तो उसमें फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत टाइम तो मिलेगा नहीं, तो फिर उसको इंक्लूड करें या साइड में रखें? नहीं, रखो. फ्यूचर पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है. उसके रीजन ये है कि टिल नाउ अपने बिजनेस में ये है, बट कितना पोटेंशियल है, आप जैसे टेम सेम दिखा रहे हैं, दैट मीन्स का पोटेंशियल मार्केट में शो कर रहे हो. तो आपका प्लान भी फ्यूचर में क्या एक्सपांड करने का हो सकता है, दैट शुड बी देयर. आप उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करोगे चलेगा, बट इट शुड बी देयर. सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो भी चलेगा इन फ्यूचर? चलेगा, 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 मेंशन करना.
कुछ भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बिजनेस प्लान में ऑप्शंस जितने ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करके बाहर आएंगे, दैट वुड बी मच बेटर. Next, sir, what should an idea pitch looks like? Because there are so many topics to cover, but we have a time constraint. Actually, जो मैंने बताया वही है आइडियल पिच में, तो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन वगैरह स्टेटमेंट रखना है, एंड टू बी क्लियर एंड टू बी ऑनेस्ट. आप 30 सेकंड्स में भी आइडिया पिच कर सकते हो, 5 मिनट्स में ही कर सकते हो, 50 मिनट्स में कर सकते हो. इट डजेंट मीन कि आप 5 मिनट से ज्यादा 50 मिनट लोगे तो आइडिया ज्यादा बेटर कन्वे कर पाओगे, ऐसा नहीं होता. इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बिकॉज एवरी प्रेजेंटेशन कंक्लूड विद द क्वेश्चन एंड आंसर. सो यू कवर द मेजर थिंग्स टच अप. अगर कुछ उनको जरूरत है क्वेश्चन एंड आंसर में, वो दे विल कवर. सपोज यू स्टार्ट विथ समथिंग, और अगर आपने बताया कि हम ऐसे 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 करेंगे बिजनेस प्लान में, फॉर 5 मिनट्स टाइम आपने ऊपर से ले लिया पूरा, देन इफ वी हैव अ क्वेश्चन समथिंग, देन विल आस्क अगेन. तो वो अगर कवर नहीं होगा डेप्थ में, देन वो क्वेश्चन एंड आंसर में आ जाएगा. बट एवरीथिंग शुड बी, आप एक लाइन में पूरा क्लियर तो होना ही चाहिए, मतलब पूरी प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्लियर होनी चाहिए. डेप्थ में जानना है, देन विल आस्क. Yes, and I think mention कर ही दिया है, for time duration of final day, first round is 10 minutes per team and the second round is for 12 minutes. Yes, then it's clear. Now you have a time. And I don't think it's required more than 10 minutes. Just any other question? Is there any other question that may be left, or the same question if not cleared yet, we can also discuss again. Yeah. I think everything is covered. Okay, again, okay, Sarma startup is such in which no significant work has been done in India. No worries, you can give your idea, you can work, you can suggest your business plan, because many things are lacking in India, so you can mention. But whatever the competition is available in outside India, you should mention in a competition slide. That should be there. Otherwise, it looks like that आपने बाहर की कोई कंपनी का बिजनेस प्लान कॉपी करके डाल दिया, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए. जो भी कंपनीज है मार्केट में, यू शुड मेंशन. India's first, you can mention verbally, but not mention in a pitch, because if it is outside India, so maybe somewhere else, maybe it is in initial stage only, so maybe कोई corner में कोई काम कर भी रहा होगा, तो आप India's first नहीं बोल सकते. So to be specific हो रहा है कि नहीं, वो आप चेक करना जरूरी है. सब लाइक 2 राउंड्स होंगे इस दिन, एलिमिनेटिंग राउंड और फाइनल. तो ऐसा कुछ रखना है कि एलिमिनेटिंग जो पहला राउंड होगा उसमें कुछ अपन ना दिखाएं, मतलब उसको थोड़ा साइड में रखे, या दोनों में सेम ही पिक्चर रहने दे. आई डोंट थिंक वो मुझे ये शायद ईसेल से ही आपको ज्यादा बेटर आंसर मिल पाएगा. इफ यू कैन फ्रॉम ईसेल टीम, इफ यू कैन गिव इट बेटर वे, or they can communicate later on. Yes, if you can mention. On final day, there will be 2 rounds. First round will be the eliminating round, and the second round is the final round. All of the shortlisted teams will first present in batches. For 10 minutes time will be given along with question answers, and then one shortlist will come among the first round. Those shortlisted teams will be presenting in the final round, and 12 minutes will be the time duration. You can add whatever you want in both the pitches, and the judging will be on the panelist. So in other way, you can also say that in a first round, if you get a specific questions that is not mentioned in the pitch deck, then you can add in a second pitch, maybe a second round. Yes, Yes, you it can is. alter your Yes, it is open for the final round. Yes, so it is open. So the floor is open. You can add in a first round if you get a specific question that is not mentioned in your pitch deck in early first round.
Then for the in between the time duration, you can add for the final round. So apart from any questions from your side. Then hopefully we have cleared all these queries. So if you have any queries in between, also you can contact eCell. Secondly, make your pitch such a way that it should be clear with the business plan. It should be like आपने अपने अंदर से लिखा हुआ है कि अगर मैं ये स्टार्टअप करता तो कैसे पैसे लाता, कैसे बिजनेस करता, कैसे रेवेन्यू जनरेट करता. एवरीथिंग शुड बी क्लियर. आप ऐसे मत बताना है जस्ट यू आर रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टअप. आप ऐसे ही समझो कि आप ही वो काम कर रहे हो. दैट इट इज बेटर टू गेट अ गुड वाइब्स एंड यू कैन सजेस्ट बेटर वे. Yes, no, from my side, yes, please. Okay. So on final day, all the members of the team needs to be present for the presentation, and you have to submit your presentation before 11th April, 11:59 p.m. Right? And if you have any further queries, you can contact us directly, and eCell SOM team or PDU IIC team. Also, you can reach out us to on our social media handles. Yes, and you can present your working prototype ready with you. Yes, it would be much better. Yes, Nandan. If anything remaining from eCell, if you can conclude. If all the questions have been done, if teams don't have any questions, we can conclude, sir. Thank you so much, sir, for your time and efforts for this session. Yes, please. Thank you. Yes. Yes. For any further questions, you can connect us directly. You can do message or call any of the team member, eCell team members, right? Thank you so much, everyone, for joining the session and making this interesting and insightful.